This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you award ceremony of Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements 2020. I would request His Excellency, Vice President Sir, to please shower his blessings on us. मित्रों, इस अवसर पर मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री इनोवेशन सेल तथा AICTE का अभिनंदन करता हूँ. I am really very happy to be amidst you all today for this August prestigious innovation festival. I call it as a festival. In the coming days, innovation should become a movement. That is the need of the hour. During the last 5 years, India has made considerable progress in the field of innovation and entrepreneurship. No doubt about it. At the world level, we have moved from 81st position to 52nd position in Global Innovation Index ranking. It is indeed a matter of great satisfaction that we have third largest startup ecosystems in the world today. It is heartening to see that the government has taken a number of initiatives to inculcate the spirit of innovation among students. Prime Minister is very keen. Over 2 million students between grade 6th to 12th are working in more than 5,100 Atal Tinkering Labs established across the country under the Atal Innovation Mission. Innovation has always been the key defining feature of human progress. Inventions, discoveries, creative artworks, architectural marvels, and experimentation in different fields of human endeavor have enriched human values from time to time. India has its own illustrious history of innovations spanning at least 20 centuries, right from the invention of zero and the decimal system by renowned mathematicians like Pingala, Aryabhatta, and Brahmagupta. There was a time when India was known as Vishwaguru and students from many countries came to study at our universities. We must regain that intellectual leadership. We must once again emerge as a global hub of learning and innovation. We have to tap into the highly talented youth population, which is brimming with new ideas, a passion for experimentation, and willingness to forge a new path. It is these youth that need encouragement, felicitation, and recognition. They must be given the guidance and freedom to explore new frontiers. There is hidden talent in every one of our youngsters. Our education institutions, especially institutions of higher education, must reinvent themselves to create these essential conditions for innovation to thrive, for creativity to blossom. I am happy to note that the new National Education Policy has made a number of recommendations that will foster innovation. It has outlined a new vision that can vastly improve quality of teaching and learning as well as research. The policy lays great emphasis on comprehension, critical thinking, analysis to discover new facets of the world knowledge. It seeks to break the silos and connect different disciplines through multidisciplinary learning. Enabling this connection between the fragments of information and evidence is truly vital for our innovation. It is this ability to question and seek answers that lies at the foundation of innovation. Our educational ecosystem must constantly nurture this innate spirit of inquiry and innovative problem solving. Atal ranking of institutions on innovation achievements is a major step to recognize excellence in creating this conducive environment for innovate. Our Prime Minister is accelerating reforms. Reform, perform, transform is the mantra he has given. So everyone working in every field should think on those three aspects. Ranking institutions through a transparent process, certain key parameters gives a well-deserved recognition to the efforts of the educational leaders who are managing these institutions and the transformational instructional leaders who are teaching students in the classroom as well as guiding them through the research process. I appreciate that innovative learning methods and courses is one of the parameters to calculate this Atal ranking. It is the classrooms and the laboratories, the projects and the learning experiments that will alter the educational landscape of our country. It is a dream articulated in the National Education Policy. The key responsibility to make this dream come true lies with the educators and educational managers. That's why we used to say education is a mission. It is not for commission. Nobody should give any remission and do not do any omission. That is the passion for the mission. If you have that passion and take this as a mission and then commission all your innate strength, you can really move forward because India is a land of knowledge. Our forefathers have given us and we must pass on to our younger generation. Prime Minister Modi ji has rightly given a timely vision of self-reliant India
through his call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. Mere confidence will not suffice. You have to be self-reliant. Self-reliance requires us to innovate, to seek implementable solutions for developmental challenges. A lot of developments are taking place, but a lot of challenges are coming. And to create a favorable environment for experimentation, India's higher education system should play the role of an enabler and force multiplier to drive Indian innovation and startup ecosystem. Greater emphasis is being laid on building a knowledge society through promotion of science, research and excellence. There could be concerted efforts to inculcate the culture of innovation and the entrepreneurship among our students to make them out-of-box thinkers, create opportunities, creative problem solvers, entrepreneurs and job creators rather than job seekers. The youth of the country must be motivated to join the developmental path more aggressively, while our scientists and researchers must come up with innovations and solutions. They must focus on making the lives of the people more comfortable, since science must also be used to make agriculture more productive and create greater wealth for the farmers. I would like to share an important thought with all of you. That is, we must focus more and more on agriculture, which is our basic culture. Even today, 52% of our people are depending on agriculture. So all our research, all our technology should be focused on agriculture also. We are coming out with so many technologies, new ideas, new innovations. So much progress is being made, undoubtedly. Technology is making forward march. In this pandemic, one sector which is performing in an excellent manner, you can call it as a silver lining, agriculture production has gone up. So really hats off to the farmers in spite of all these adverse conditions. They are working hard. They are the backbone of our country. We must come to their aid. The youngsters who are innovating, who are coming with new ideas, please focus enough attention on agriculture also. I've seen some universities like Agriculture University, Haryana, they are also there in the list. Krishi Mantralaya, Shiksha Mantralaya, our food processing, and then your AICTE, because you are the guide, and also Indian Council for Agriculture Research. You must all work in unison. Focus your attention on this issue. Motivate educators, the students, to focus special attention on this aspect, because we have food security, no doubt, but we can provide food for the entire world. That is our capacity. So I would like this occasion to tell all our people concerned with various forms of education, please pay more attention and more focus on agriculture. As I told you, this is our basic culture. Ministry of Education, it has taken a big leap forward with the formulation of new education policy. This can serve as a robust framework for instilling a new sense of direction and a culture of continuous quality improvement in our institutions of higher learning. Innovation must become the heartbeat of education. Quest for excellence must become the norm. On the occasion of the result announcement ceremony of Atal ranking institutions on innovations and achievements, I congratulate all the institutions which have secured the top honors. I would like to compliment not only heads, but also the other faculty members, the youngsters who are all assisting them. My congratulations to all of them. But please redouble your efforts to move up in this ranking exercise next time. You have enough opportunity. Try to work hard. I compliment All India Council for Technical Education, Ministry of Innovation Cell, planning this initiative and successfully implementing 2 editions. I'm happy to see that there is a considerable increase in participation of the institutions in the 2nd edition as compared to last year. I hope this ranking, named after one of the India's illustrious Prime Minister, will inspire all higher education institutions to be Atal in their commitment to creating world-class institutions. My best wishes to all of you. Youngsters, God bless you. Come out with more and more innovations and then take the country forward. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Heartful thanks to Honorable Vice President, sir. Your words always act as guiding and motivation force for us, sir. मेरी प्रार्थना है आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार से वह अपने विचार हम सबसे साझा करें। भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति श्रद्धेय वेंकैया नायडू जी, जिनका मार्गदर्शन एक बहुत लंबे समय से इस देश को मिलता रहा है,
हमारे लिए नई शिक्षा नीति के पहला दिन है जब परिवर्तन का ये क्षण आया है और कल ही महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस मंत्रालय का नाम अधिसूचना कर दी है और आज से आपके आशीर्वाद से अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया। देश के लोगों को मैं इस बात के लिए शुभकामना और बधाई भी देना चाहता हूं कि इस मंत्रालय का नाम नहीं बदला बल्कि हमने नीतियों को भी बदला है और इस देश को शिखर पर पहुंचाने की नीति का आज से तेजी से क्रियान्वयन हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक पथ प्रदर्शक नीतिगत ये पहल है जो छात्रों और संकाय के बीच नवाचार, उद्यमिता, विकास के प्रचार प्रसार और उसके समर्थन से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक में करने के लिए AICTE और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से ये अभिनव प्रयोग आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षा मंत्रालय ने भारत में नवाचार को उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में नीतिगत पहल के लिए नए कार्यक्रम करता आ रहे और इसी तरह ये प्रारंभिक जो मंत्रालय की इनोवेशन सेल है इसकी स्थापना की गई और ये सुनिश्चित करने की पहल की गई कि नवाचार और उद्यमिता का पारस्परिक गतिविधियां कैसे बन सकती हैं, हैकाथॉन को उच्च स्तर के संस्थानों से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके तरीकों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और इन पहलों से जो ग्रास रूट है उनको इनोवेशन का माहौल कैसे हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में नीचे से लेकर के ऊपर तक किस तरीके से ये हमारे जो महत्वपूर्ण संस्थान है नवाचार और उद्यमिता का आंदोलन के रूप में कैसे इसको विकसित कर सकते हैं। ये अटल रैंकिंग का विशेष महत्व है। मामई जैसे कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में हम नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई है। वैसे तो हम लगातार शोध और अनुसंधान की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। हमने स्पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 127 देशों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइक के तहत अंतर विषय शोध कर रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में हम शोध और अनुसंधान को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि एक शोधात्मक अनुसंधानात्मक संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिल सके और इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी की दृष्टि से इन चारों में NRF के तहत कैसे करके हम इन चारों विधाओं को आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं और जो शोध करता है उसका जो अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान के अवसरों पर हम कैसे ध्यान केंद्रित करके उसको नीचे तक बढ़ा सकते हैं, ये भी इसका लक्ष्य है जिससे पूरी शिक्षा प्रणाली को और उन्नत करने का मौका मिलेगा। हमारे मौजूद शिक्षा जो प्रणाली है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ ये साहसिक कदम है जो उसके बीच में एक सूत्र बनेगा, एक सेतु का काम करेगा। मामईन शिक्षा प्रणाली बहुत सारे लचीलेपन को हमने किया और जैसे कि आपको मालूम है कि जो हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं उसमें सभी छात्रों को पहली बार खुलापन मिला है, उनको विषय की भी चुनने की आजादी है और यदि प्रस्तुति बस सिरमन उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ता है तो वो निराश नहीं होंगे। यदि 2 साल का वो कोई कोर्स कर रहा है, 4 साल का होना था लेकिन 2 ही साल में छोड़ के जाता है तो पहले वर्ष में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे वर्ष में उसको डिप्लोमा मिलेगा, फिर उसको डिग्री मिलेगी और क्रेडिट बैंक उसका बन रहा है। यदि वो छोड़कर दोबारा आना चाहता है तो फिर वहीं से वो शुरू करता है। डिजी लॉकर्स की व्यवस्था की बहुत ही अभिनव है छात्र के लिए, उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिना किसी रोक टोक के ये पहली बार हम इन लचीलेपन को लाए हैं और इससे निश्चित रूप में जहां 100% स्कूली शिक्षा में GR बढ़ाएंगे वहां उच्च शिक्षा में 50% तक 2035 तक GR बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, जिससे 3.5 करोड़ नए छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। और जैसे कि हमारा फोकस नवाचार पर रहा है और संज्ञात्मक कौशल और डिजाइन सोच की प्रक्रियाओं में हम लगातार सुधार की दिशा में एक मजबूत मानसिकता का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, ये उसकी कवायतें हैं। आज का दिन भी हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं है जब हमारे जो छात्र हैं वो नवाचार के साथ उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आ रहे हैं। एक बार फिर मैं हृदय की गहराई से मामई में आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। You are listening to a program on award ceremony of Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements 2020. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our website newsonair.com. You may email opinion about this program at AIRNSTtalks
at gmail.com.